Well, let's take you through how Yogi Adityanath's Darbar is now attracting women who are victims of triple talaq, and it's becoming one of the grounds to now share their views as well. Muslim women who are victims of triple talaq are taking their battle to the Chief Minister. They keep flocking at Chief Minister's Darbar. Many women who claim that they are dumped by their husband are now taking their pleas to Yogi Adityanath. Many victims are opposed to Muslim Personal Law Board stand backing triple talaq. Interestingly, it's the Shia Muslim Personal Law Board that has now issued a fatwa against triple talaq. Many Muslim women who are also preparing to provide Yogi Adityanath with details of how arbitrary triple talaq rules violate the Sharia law as well. मुझे मालूम नहीं ऐसे कैसे तलाक हो सकता है, ये तो तलाक हुआ ही नहीं है मेरा। और एक बात मतलब अगर कोई मर्द इस संग से करता है तो उसको कम से कम सजा 5 साल से कम ना होना चाहिए, और मतलब ये तलाक जो है इसको बैन लगना चाहिए बिल्कुल। उन्होंने हमें कहा था 27 में जब हम लोग मिले थे कि हम इस पे जो है कॉन्क्रीट स्टेप्स लेंगे एंड वी विल फाइंड के इस तरह का अब किसी भी लेडी के साथ में इनजस्टिस ना हो। और उन्होंने हमें बोला था यू कैन कम ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, एंड सो वी आर हियर इन द फर्स्ट वीक। My colleague Maushmi is joining us now. Maushmi, it was interesting when Yogi Adityanath came to power. He talked about Sabka Saath, Sabka Vikas. He also said that he will bring the change and his focus will be also development of all communities. So Maushmi, we're seeing with Muslim women coming to Yogi Adityanath's Darbar, a change of triple talaq laws on the cards. Will Yogi Adityanath be able to reach out to the Muslim communities to ensure they get justice? See, Devina, ever since the CM has taken charge, his office has been thronged by Muslim women who are actually demanding a ban on triple talaq. They are saying that they have voted for the BJP because BJP is the only party that has gone to the court in support of these women who have been victims of triple talaq. We are joined by Nasir Ahmed Saab. He's from Bareilly, and his daughter Anjum is presently meeting the Chief Minister along with Seema, who's from Rampur, and Farah Faiz, who's an advocate and has filed a case in the triple talaq issue. We'll speak to Nasir Ahmed Saab. Nasir Saab, बताइए कितनी नाइंसाफी से 3 तलाक दिया आपके दामाद ने आपकी बेटी को? वो हर बेजरे बहाने बनाया, टेम्पो चलाता तो कह जाता घर में कि खाना नहीं बनाना, होटल से ले आएंगे, तो उसने खाना नहीं बनाया। आके फिर दोस्त लगा दिया कि खाना नहीं बनाया तो दह मार। और मोहल्ले वालों से कहा कि खाना नहीं बनाया इसलिए मारा, तो मोहल्ले वाले भी कहने लगे कि अंजुम की गलती है। कह गया वो कि मैं ले आऊँगा खाना होटल से, तो वो कैसे बनाती? सही बात है। ऐसी बहुत फिर ऐसी और भी कई मारपीट होती, उसको मारता तो उसने जो सब्जी काटने की छुरी थी वो ऐसे फेंकी तो कूलर में लगी, तो बाहर आके बोल लिया, तब मारा बहुत। तो बाहर आके बोल दिया उसने, वो तो निकलती नहीं घर से, बाहर आके बोल दिया लोगों के कूलर काट दिया इसलिए मारा, तो अंजुम की गलती है। मोहल्ले वाले का तलाक को 4था महीना आई है, 19 तारीख को दी थी। आपने कहा कि सबके सामने आके बोला फिर उन्होंने? हाँ, सबके सामने आके बाहर बोला, हम तो काम पे थे, तो वो कहेगा जो तुम सब गवाह हो, मैं इसको तलाक दिए जा रहा हूँ 3 बार कह के, और चला गया। फिर हम काम पे से हमारा लड़का बुलाने गया हमें कि चलो घर चलो, तो क्या है बोले उसने तलाक दे दी। तो हम घर पे आए तो उससे मारपीट भी हुई, फिर थाने दरबार भी हुआ। This is just one of the thousands of examples of triple talaq, the way triple talaq is being given in anger, on an email, on an SMS, a latest one on a postcard. So clearly these women are actually coming to the Chief Minister. We do believe that there is a presentation right now that is going on at the Chief Minister's residence. Farah Faiz, the advocate, is actually giving an entire layout of what are the pros and cons of this entire issue, and the Chief Minister, these Muslim women actually expect that the Chief Minister would bring in a law, a policy or a way out so that this menace of triple talaq is over. All right, Maushmi, thanks for joining us with all those details.